Namaskar students, welcome to D&S Education. My name is Saurabh Singh. In this video, I am going to discuss about the four operations on rational number. Before starting this video, let me tell you, if you have not watched the previous video of rational number, then watch the playlist of rational number first. That will make you easily understand this topic. So let's start today's session. First we will start with addition of rational number. Okay, rational numbers are added after converting their negative denominators to positive denominator. Now we are adding two rational numbers. In that case, first we are changing the negative denominator to the positive denominator. After that we have two cases, that is rational number having same denominators, and second case rational number having different denominator. Let's discuss these cases one by one. First we are going to discuss about rational numbers having same denominators. Now, okay, you can see here we have p upon q and r upon q be two rational numbers with same denominator q. You can easily see that both rational number have same denominator. Now we have to add these two rational number. What we are doing here, we are adding the numerators together and putting a common denominator for both of the rational number. Okay, in order to add two rational number with same denominator, add their numerators that I told you or that I have written here, and write the sum as numerator for the common denominator that is also written here. Okay, तो जब भी आपको रेशनल नंबर को ऐड करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर करना है. उसके बाद अपने पास दो केसेज आएंगे. पहला केस कि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम होंगे. जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको उनको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है और एक कॉमन डिनोमिनेटर रखना है. ओके, let's talk about an example of addition of rational number. Now here you can see 19 upon 5 and minus 23 upon 5 as two rational number. One is positive rational number and other one is negative rational number. Now we know we how will you add this? Add their numerators. Here we are adding their numerators and we are putting a common denominator here. Now we know that these two are integers. One is positive integer, one is negative integer. In this case, we will do subtraction. So after subtraction, we got 4. Now we know that 23 has greater value and sign of 23 is minus. That's why we are putting a negative sign in our result. So when you add 19 upon 5 and minus 23 upon 5, our result is minus 4 upon 5. So that's how you will add rational numbers having same denominators. Moving on, we will now discuss about our second case, that is rational numbers with different denominators. Okay, what you have to do, you have to express each of given rational number with common denominator by taking LCM of their denominators, then add them as in case second. First, okay, जब दूसरा केस है अपने पास मीन्स जब रेशनल नंबर्स के डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे, उस केस में आपको क्या करना है, जितने भी रेशनल नंबर दे रखे हैं उनको कॉमन डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और फिर उससे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो पहले केस के जैसे सिंपली ऐड कर देंगे. ओके, now we have a rational number 9 upon 5 and we have another rational number 23 upon minus 15. So I told you earlier, first you have to convert negative denominator into positive denominator. Now you can see here we have a negative denominator, that is 23 upon minus 15. So in first step we have converted this negative denominator into positive denominator.
अब ये -23 क्यों हो गया +23 से? सो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 23 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 23, -15 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 15। लेकिन हम लोग ये शो नहीं करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव ऊपर कैसे जाता है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कैसे जाता है। ओके, नाउ वी कैन सी denominator of these two rational numbers are different. So first take LCM of these their denominator. So LCM of 5 and 15 is 15. Now you have to convert these rational number into equivalent rational number. So we have to convert 9 upon 5 with a denominator 15. Okay, how will you make 5 as 15? By multiplying 5 with 3. So that's why we are multiplying 5 with 3. Now we are converting these into equivalent rational numbers, so we have to multiply with 3 in numerator also. Now here we can see our denominator is 15 and our LCM is also 15, so we do not have to do anything. Now we can see both the rational numbers have same denominator. Now अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही rational number का denominator same है, जो LCM के equal है। अब आप केस फर्स्ट के जैसे इसको ऐड कर दीजिए, मीन्स इनके न्यूमरेटर्स को आपस में प्लस करेंगे और एक कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अगेन we have a positive integer and negative integer. In this scenario we are going to do subtraction. After subtraction we got 4 upon 15. Okay, that's how you will do addition of rational number with different denominator. Now we have another method for case 2, means we for rational number having same denominator. Let's discuss that method also. Okay, what you have to do, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द नेगेटिव डिनोमिनेटर इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप है ये पहले के जैसे ही, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने एलसीएम लिया था पुराने वाले में भी, यहाँ भी वही करेंगे। नाउ फ्रॉम थर्ड स्टेप वी विल चेंज आवर प्रोसेस। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट LCM as our denominator. Now we will check each rational number one by one. Now 9 upon 5. Now this rational number has 5 as denominator. We have to make this denominator as 15. So we have to multiply this 5 with 3. So that's why we are multiplying this rational numbers numerator with 3. Means 9 is multiplied with 3. Now here we can say denominator and LCM both are same, means the common denominator is same, so we are not doing anything, we are writing just our numerator. Now we will multiply 27 and -23 upon 15. Now we will do subtraction, so 4 upon 15. ओके तो इस तरीके से आप दूसरे मेथड से करोगे एडिशन रेशनल नंबर का। आई प्रेफर कि आप ये वाला मेथड यूज करो, यहाँ पे एक स्टेप रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको पहले वाला जो मेथड है वो इजी लगता है तो आप उसको भी कर सकते हो, बट जहाँ एक साथ बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे वहाँ पे इस मेथड को सॉल्व से यूज करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। whatever method you choose, do right thing. Now moving on, we will discuss about subtraction of rational number. Before knowing about subtraction of rational number, we will discuss about additive inverse of rational number. Additive inverse के बारे में आप पहले भी इंटीजर में पढ़ चुके हो। क्या है? For every rational number on the number line there is a rational number at the other side of 0 which has the same absolute value but opposite in sign. मतलब हर एक रेशनल नंबर जो नंबर लाइन पे है उसके अपोजिट में भी एक रेशनल नंबर लाइन है, मतलब जीरो के दूसरे साइड में, जिसका वैल्यू तो सेम है बट साइन क्या है उसका डिफरेंट है। जैसे 1/2 के लिए वहां पे क्या है -1/2, और जैसे p/q के लिए क्या होगा एक रेशनल नंबर -p/q। ओके, p/q एक रेशनल नंबर है जिसके लिए उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा -p/q।
नाउ अब हमें पता है कि जब हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ भी एक रेशनल नंबर है और इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ओके। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, जीरो। एडिटिव इनवर्स ऑफ p अपॉन क्यू इज माइनस पी अपॉन क्यू एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ minus p upon q is plus p upon q. So this is the additive inverse of a rational number. We are going to use additive inverse in finding the subtraction of rational number. Okay, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Moving on, subtraction of rational number. Subtracting one rational number from another rational number is same as adding the additive inverse of रेशनल नंबर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। तो क्या बोल रहा है ये कि सब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना वैसा ही है जैसा हम लोग किसी दूसरे रेशनल नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स को क्यों पढ़ा। ओके, कैसे करेंगे इसको। सपोज p अपॉन क्यू एंड r अपॉन s, ये हमारे पास दो रेशनल नंबर है। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट r upon s from p upon q. Now what you have to do, you have to change this negative sign into positive। मतलब आप subtraction के जगह पे क्या लगा दोगे, एडिशन, और जो बाद वाला रेशनल नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स, तो r upon s का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस r upon s। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे करना है। ओके, नाउ we will look for an example. So we have to subtract 7 upon 12 from 5 upon 8. Now in case of subtraction, whatever value is just followed by from, we will write that value first. So we have to write 5 upon 8 first, then we will write 7 upon 12. Now what you have to do, you have to replace this subtraction sign with addition sign, and second case what you have to do, you have to write the additive inverse of second number. So additive inverse of 7 upon 12 is minus 7 upon 12. Wait a second, I erase all these. Okay. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इस केस में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 8 ऑफ 12 का कितना हो जाएगा, 24। नाउ we are putting LCM as our common denominator. Now we are multiplying 5 with 3 because denominator of 5 is 8, and by multiplying 8 with 3 it becomes 24. Similarly, we are multiplying minus 7 with 2 because denominator of minus 7 is 12, and by multiplying 12 with 2 we get 24. Now when you multiply 5 with 3 we get 15, and when you multiply minus 7 with 2 we get minus 14. Now we have a positive integer and one is negative integer. What you have to do, you have to subtract them. So after subtraction we got 1 upon 24. So that's how you do subtraction of rational number. तो इस तरीके से आप rational number का subtraction करोगे। Now moving on, we have next topic as multiplication of rational number. So multiplication of rational number says the product of two rational number can be found by multiplying the numerator with numerator and denominator with denominator। मतलब ये बोला जा रहा है कि किसी भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा, आप उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और उसके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट मी शो यू हाउ विल यू डू इट। So we have two rational number p upon q and r upon s. We have to find the product of these two rational number. So what we are going to do, we are multiplying their numerator together and we are multiplying their denominator together. You can see here p is multiplied with r and q is multiplied with s. Now moving on, in case of multiplication of rational number we have to follow integer multiplication rules। मतलब हमें रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जब सेम साइन के रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सपोज वी हैव टू positive rational number, we are multiplying them, then our product will be a positive rational number, or we have two negative rational number or we are multiplying them, then our product is
a positive rational number, and for different sign we are getting a negative product. Suppose we have a positive rational number and one is a negative rational number. So our product will be a negative rational number. And one more important thing, whenever we multiply a rational number by 0, our product is always 0. You do not have to do anything. You will simply put 0 in front of our product. Moving on, we will discuss one example of multiplication of rational number. We have two rational number, that is 3 upon 7 minus 5 upon 9. So we have to find their product. So what I told you, multiply their numerators together and multiply their denominators together. So we multiplied 3 with 5, then we get 15, 7 multiplied with 9, we get 63. Now you can see this rational number is not in the standard form. So you have to simplify it. So after simplifying we get minus 5 upon 12. ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। लेकिन अगर आप इसको न्यूमरेटर्स को ऐड मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते और डिनोमिनेटर्स को आपस में, अगर आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। 3 की टेबल में ये 1 टाइम पे जाएगा और 3 की टेबल में ये 3 टाइम पे जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ न्यूमरेटर में क्या 1, यहाँ न्यूमरेटर में क्या है 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, और यहाँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ 3 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो इस तरीके से आप एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट आपका चॉइस है, आप यहाँ पे आके सिंप्लीफाई करो या फिर यहीं पे सिंप्लीफाई कर दो फर्स्ट स्टेप में। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव reciprocal or multiplicative inverse of rational number. We are going to use this reciprocal in finding the division of rational number. So what does reciprocal says? Two non-zero rational number. Non-zero means rational number should be positive or negative rational number are said to be reciprocal of each other if their product is 1. मतलब दो rational number को जब हम multiply करेंगे और उनका product अगर 1 आ गया, मतलब दोनों ही रेशनल नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कैसे मिलेगा रेसिप्रोकल? आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ इंटरचेंज कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ। ओके, सपोज वी हैव अ रेशनल नंबर p अपॉन q एंड सो रेसिप्रोकल इज q अपॉन p. Okay, you can see here we have changed this denominator with numerator and this numerator with denominator. So reciprocal of p upon q is q upon p. Now we will discuss about division of rational number. So division of rational number, what it does is said dividing a rational number by dividing by another non-zero rational number is same as मल्टीप्लाइंग द डिविडेंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजन। मतलब एक रेशनल नंबर को दूसरे नॉन जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके रेसिप्रोकल से। कैसे करोगे, लेट मी शो यू। ओके, वी हैव ओके, एंड वन मोर थिंग, in division of rational number we have to follow rules for division of integer also. Means when you are multiplying same sign of when you are dividing same sign of rational number you are getting a positive rational number, or when you are dividing different sign of rational number you are getting a negative rational number. Okay, suppose we have two rational number p upon q and r upon s. Now we have to divide it. So we what you have to do, you have to replace this division sign with multiplication, and next you have to reciprocate the just following rational number. Now we have to do multiplication, and in case of multiplication we know that simply multiply numerators together and multiply denominators together. So that's how you will do division of rational number. Let's discuss one example. Okay, we have a rational number 3 upon 7 and another minus 5 upon 9. What you have to do, you have to replace this division sign with multiplication, and you have to reciprocate just after the
और जस्ट फॉलोड रेशनल नंबर. सो रेसिप्रोकल ऑफ -5/9 इज 9 -9/5. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये होगा कि इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 9/-5 होगा. ओके, क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर को इंटरचेंज करते हैं डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ. बट यहाँ पे क्या है, -9/5. तो लेट मी टेल यू, we will interchange only the value of numerator and denominator. We will not change or we will not exchange the sign, means positive, either positive sign or negative sign. मतलब जब भी आप रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकेट करोगे किसी रेशनल नंबर को तो वहां सिर्फ आप वैल्यू को इंटरचेंज करो, न्यूमरेटर को वैल्यू को इंटरचेंज करो, उसके साइन को नहीं. नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते. 3 और -9 मल्टीप्लाई होंगे तो -27, 7 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 35. तो इस तरीके से आप डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर करोगे. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe, like and share this video with your friends and family. Okay, see you in the next session. Thank you.